Good morning, everyone. This is entrepreneurship, and we will be starting with and ending with chapter number 5, that is the selection of an enterprise. So, we'll be discussing with the two topics. That is, number one is just a general topic, the basic activities, and the third one is the second one is the factors which are to be considered in selection of an enterprise. Okay, so chapter 5 is also a short chapter, तो उसमें भी there will be no parts in this chapter. There will be only one part, that is the basic part, that is the selection of an enterprise, the factors which are to be considered for selecting of the enterprise. So enterprise are of different types, as we have studied in class 11. Okay, so selection of an enterprise means the types of enterprise you have to select, which you have to सेलेक्ट. ठीक है, जैसे कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है, या सोल ट्रेडिंग बिजनेस होता है, या पार्टनरशिप, या जॉइंट स्टॉक कंपनी. तो which the what size of business you are choosing, that is to be considered in chapter, that would the factors which are to be considered before selecting the size or before selecting the enterprise, that is to be discussed in chapter number 5. So the basic activities are the selection of an enterprise generally depends upon some of the nature of the product. किस type का product है, small product है तो अगर sole trading में काम चल जाएगा, then you can go for sole trading. Quantity, the caliber of the entrepreneur, मतलब can an entrepreneur can an entrepreneur be able to handle large scale industry. ठीक है, या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, या पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किस टाइप का एंटरप्राइज वो चूज कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है, here decisions is to be taken in terms of sole trading, joint Hindu family, partnerships, joint stock company, and cooperative society as to which one is to be considered for business. If the nature of the business is bank, the word written here coronavirus is written mistakenly, so ignore that. Is bank related to options like sole trading, joint Hindu family, and partnership, which cannot be favored. The nature of enterprise did determine the rights and responsibilities of the entrepreneur. तो जो भी नेचर रहेगा तुम्हारे एंटरप्राइज का, जो भी साइज रहेगा, वो डिसाइड करता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर. ठीक है, वो केपेबल, किस बिजनेस को संभालने के लिए वो केपेबल है. ओके, now here comes the most important part of the chapter, that are the factors which are to be considered in selection of an enterprise. So number one is, see, an entrepreneur must not rush to his decision. He should give importance to all the factors before choosing the size of the enterprise, whether he will go for sole trading, or he'll go for partnership, or he'll go for some other, he'll go for joint stock company, or whether he'll go for cooperative society. What is this also depends upon the aims and objectives of the entrepreneur. ठीक है, whether he is only looking for profit margin, or he is looking for society's welfare, or he only wants to earn his living, or he want to launch a new product. So
the aims and objectives also helps him to define the also helps him to decide the size of the enterprise. ठीक है, तो number one है easy formation. So if he is looking for easy formation, then generally he'll go for sole trading because it is easy to form and it does not include any government involvement. ठीक है, दूसरा है कि types of business activities. Now he can select the different types of business activities and he will also go for small scale enterprise. ठीक है, तो वो पार्टनरशिप में भी कर सकता है, जैसे कि if he is giving a service of a barber or a tailor or a jeweler, तो he can go for partnership. ठीक है, now direct control, if he wants direct control then he'll basically go for sole trading क्योंकि उसमें किसी का involvement नहीं है, only one man is needed to handle the whole business. ठीक है, now the next one is area of operation. If he wants his area to be limited then he'll go for sole trading, and if he want a vast area for his business then he'll go for a joint stock company or a partnership firm or any international or national scale of the enterprise. ठीक है, now the fifth one is the availability of capital. Now if the availability of capital is adequate or self sufficient then obviously he'll choose sole trading. Otherwise अगर पार्टनरशिप को चूज कर रहा है कैपिटल्स को देखते हुए तो वो ये भी देखेगा कि सारे पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कितना है उस हिसाब से डिसाइड करेगा कि whether he'll go for sole trading or he'll go for partnership. Now secrecy, if he wants secrecy in his business then definitely he'll go for sole trading क्योंकि बाकी किसी भी types of business में अगर पार्टनरशिप हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या जॉइंट स्टॉक कंपनी हो या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो और किसी भी टाइप के बिजनेस में पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज जो भी है और किसी भी बिजनेस में सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो सकता है. सीक्रेसी कैन बी मेंटेन्ड ओनली इन सोल ट्रेडिंग. ठीक है, नाउ स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी. नाउ द लाइफ ऑफ सोल ट्रेडिंग इज डायरेक्टली लिंक टू द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. तो अगर उसको स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी चाहिए देन ही will go for either for the life of a partnership enterprise does not sound stable, and if the stability in business is desirable then it must be done in the shape of a कंपनी. ठीक है, तो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप दोनों ही कहीं ना कहीं डिपेंड करता है अपॉन द लाइफ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. बट इफ इट्स अ कंपनी तो ये जो है एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे किसी का भी लाइफ या डेथ डिसाइड नहीं करता है कि कितना आगे रह जाएगा ये कंपनी. ओके, क्योंकि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर जो जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं तो किसी एक आदमी का डेथ या लाइफ जो है वो डिसॉल्व नहीं कर सकता कंपनी को. ओके, नाउ द गवर्नमेंट रेगुलेशंस. ओके, if he want a lot of government regulation then obviously he'll go for company for a public or public sector or private sector enterprise. लेकिन अगर उसको गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए तो वो जाएगा सोल ट्रेडिंग या फिर पार्टनरशिप में. नाउ नेक्स्ट वन इज कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज. ठीक है, तो कंप्लीशन ऑफ फॉर्मेलिटीज जो है अगर नॉमिनल फॉर्मेलिटीज में जाएगा तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप, लेकिन अगर वो बहुत सारा फॉर्मेलिटीज में जाएगा जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया या लिस्टिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स हो गया तो उसको कंपनी चूज करना पड़ेगा. ठीक है, लॉन्चिंग द एंटरप्राइज. An entrepreneur expected to arrange necessary resources like men, machine, material, finance and managerial skills etc. before launching the enterprise. तो अगर स्मॉल स्केल है तो वो सोल ट्रेडिंग होगा, और अगर उसको अच्छे से लॉन्च करना है with all the necessary things then he'll definitely go for a company. Okay, so these are the types of enterprises we have already studied about in class 11. Sole trading, partnership, joint stock company, private public sector enterprises, then cooperative societies. ठीक है, तो इसमें से किसको चूज करना है वो चूज करने से पहले ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है. सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5. There is only one topic which is very important, that are the factors which are to be considered before selecting the enterprise. So that's all for today.
Please make notes of these captions and start defining these captions in around 5 to 6 lines. Thank you.